Hello, good morning dear students. Welcome back to chemistry class. In the last sessions, we have completed electrolytic cell and electrolysis. Correct? What is meant by electrolysis? How it is carried? What are anodes, cathodes? What is the theory on which we are going to explain the electrolysis, etc. we have completed. And we also discussed about some general statements of Faraday's first law and second law. Now we'll move to some important concept, that is quantitative aspects of electrolysis. It is very important one. Quantitative aspects of electrolysis. So in this part, can you recall Faraday's first law and second law? In simple words, look at this. First law of electrolysis. Faraday's first law. What is the mathematical statement? It is first law, W is proportional to Q. W is proportional to Q, right? W is proportional to Q. Where W is nothing but mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of current, quantity of electricity passed through the electrolytic solutions. Now, if we remove this proportionality symbol, in that place I can write Z, where Z is electrochemical equivalent. Correct? Z is electrochemical equivalent. But we know that Q is equals to electrochemical equivalent. W is equals to Z into Q. Here, quantity of electricity passed, it is noted when I ampere of current passed for t seconds. Current into time. So therefore directly we can write mass of substance deposited or liberated is equals to I into T. Z I T. ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल कुछ रिलेशनशिप. Similar to this, we also discussed the second law of electrolysis. Second law of electrolysis. इसका स्टेटमेंट क्या था? If Q remains constant, quantity of electricity अगर constant है, remains the same है, in that case, that is W1 divided by W2, that is equals to E1 by E2. E1 by E2. ये mathematical statement है second law. Where W1 and W2 are the mass of substance deposited or liberated. And ये किसके ऊपर dependent है? It depends on its equivalent weight. Depends upon its equivalent weight. Now ये concept को थोड़ा with an example will illustrate these two concepts by taking an example. Let us consider an example where how we are going to explain these concepts. First law and second law. इसके ऊपर problems कैसे पूछते, कैसे solve करना, वो देखेंगे यहाँ पर. Now, according to these two laws, we can calculate W, that is mass of substance deposited or liberated. We can calculate. Correct? उसके लिए आपको क्या चाहिए? Quantity of current. कितना current pass कर रहे हैं वो चाहिए. So how you are going to calculate the quantity of electric current? वो आपको यहाँ पर formula है. The quantity of electric current can be calculated by this formula, that is I into T. When I ampere of current is passed through the solution for t seconds, then that is its product is nothing but coulombs. ये formula है. तो ये find out करने के लिए आपको ये दोनों चाहिए. By knowing this you can calculate, right? So
Equivalent weight we are not using. Equivalent weight in the modern terminologies we are not using the equivalent weight. So here in equivalent weight के जगह हम number of moles of electrons we are using. Number of moles of electrons we are using. So then based upon the number of moles of electrons we are going to calculate the quantity of chemical reaction taking place. So how to calculate the number of moles of electrons involved? How to calculate or how to find out the number of moles of electrons required? So in this case, so first law of electrolysis, second law of electrolysis, that is first law and second law, इन दोनों के ऊपर ऐसा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक रिएक्शंस का. Suppose if this is a vessel in which I have taken copper sulfate solution. General one example. Copper sulfate solution is taken in the electrolytic tank, and so this electrolytic solution I have passed current. इसके थ्रू करंट पास करेंगे. ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन है इसका. Now when it is electrolyzed, electrolyze कैसे करते हैं? Two metal rods dipped in this, and these two are connected with a battery, plus minus. It is minus, it is plus. ये एनोड है and this one is cathode. एनोड कैथोड दोनों हो गए यहाँ पर. Okay, now you can consider at any electrode how the reaction is taking place. So let us consider any one electrodes. अब सिंपल एग्जांपल देखिए. अब डिपोजिशन का कंसिडर किया तो Cu+2 which gains 2 electrons and which gives rise to copper. Okay, और वाइस वर्सा ऑपोजिट रिएक्शन में ले सकते हैं. सपोज इसके जगह कॉपर, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल देखेंगे. अब आप NaCl लिया है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट. इसके अंदर क्या है? NaCl साल्ट यू हैव टेकन. कौन सा? सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट है. व्हेन दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये जो है ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्या हो जाएगा? दिस इज प्लस माइनस एक्सेट्रा माइनस प्लस. तो सोडियम क्लोराइड साल्ट को इलेक्ट्रोलाइज किया तो आपको पता है यहाँ पर 2 आयन से. इलेक्ट्रोलाइट बोले तो इसके अंदर क्या रहता है? द सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ Na+ आयन as well as Cl- आयन. So in this case it consists of 2 ions, Na+ and Cl-. So here 2 reactions are possible. At anode, in this case anode में कौन सा रिएक्शन है? At anode oxidation होते हैं. And deposition, reduction, gain of electrons. At anode oxidation कौन सा हो रहा है यहाँ पर? Cl- है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है. The species which is rich in electron undergo a loss, that is oxidation. So Cl- it undergo oxidation which gives Cl2 gas. Chlorine gas liberate होता है, plus 1 electron is lost. Similarly, at कैथोड में कौन सा रिएक्शन है? सोडियम Na+ आयन है ये. Na+ ion, it undergoing reduction. Reduction means gain of electrons, gives rise to sodium Na deposition हुआ. ये क्लोरीन गैस है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. I have considered 2 examples. When copper sulfate solutions undergoing electrolysis or when sodium chloride solution undergoing electrolysis, we have different reactions. तो यहाँ पर भी exactly like this you can write 2 reactions in this case also. यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है? At एनोड. एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन, आपको पता है कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एनोड में ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो कॉपर गिव्स rise to Cu+2 plus 2 electrons
at cathode कंसिडर किया तो कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so Cu+2 gains 2 electrons and copper is deposited, so here you can consider anode or cathode, कौन से भी एक रिएक्शंस कंसिडर करो। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Here by knowing one reaction, let us consider any one reaction among these two. So suppose if I consider a copper, Cu+2 plus 2 electrons which gives rise to copper deposition. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने करंट पास किया तो समथिंग इज डिपॉजिटेड, करंट पास किया, सम अमाउंट इज गेट आइदर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। अब ये कितना डिपॉजिट हुआ वो फाइंड आउट करने का है क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस बाय द पैसेज ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये आपको फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, आपको ये चाहिए। Q इज रिक्वायर्ड, फिर Q कैसा फाइंड आउट करते हैं, Q मींस व्हाट, चार्ज, Q इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज, यहाँ पर करंट चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर लुक एट दिस, इन दिस रिएक्शन एज पर द स्टोइकियोमेट्री आपको पता है 2 moles of electron gives rise to 1 mole of copper। अगर 2 moles of electrons मैंने पास किया तो 1 mole of copper आयन डिपॉजिट हो रहा है आपको, करेक्ट है। देखिए स्टोइकियोमेट्री देखिए यहाँ पर 2 moles of electrons, यहाँ पर जो है ये रिडक्शन का है, रिडक्शन बोलते हैं यहाँ पर, इधर से 2 moles of electron पास किया, करंट पास कर रहे हैं यहाँ पर, 2 moles of electron अगर तुमको यहाँ पर आया तो कितना डिपोजिशन हो रहा है आपको, 1 mole of copper is get deposited, 1 mole of copper। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 ग्राम get deposited by using 2 moles of electron। ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में बोल दिया हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जगह नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल्स को कैन यू कन्वर्ट इनटू चार्ज, कन्वर्ट कर सकते हैं आपको, क्योंकि 1 मोल हियर द चार्ज क्या है, ये जो है Q इज नथिंग बट चार्ज, ये कैसा है I इंटू टी, करेंट, दिस इज इन कूलम से, ये कूलम से, दिस वन इज एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इज नथिंग बट कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड इज नथिंग बट कूलम, ये आपको पता है। तो यहां पर आइए 2 moles of electron gives rise to 63.5 grams of copper, 2 moles of electron है तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यहां पर प्लीज नोट दिस वन पॉइंट, चार्ज on 1 mole of electrons is known as 1 farad, 1 farad, it is represented by a constant F, 1 farad in honor of Michael Faraday। Charge on 1 mole of electrons is taken as 1 farad, तो यहाँ पर 1 farad a constant value है, 1 farad is nothing but चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फैराड इज इक्वल टू कितना है, चार्ज ऑन 1 मोल। अब 1 मोल बोले तो कितना है, 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23, 1 मोल है। नाउ यू नो दैट चार्ज ऑफ a single electron कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स 1.602 into 10 to the power -19 minus 19। So here 1 farad or simply we can write F, 1 farad is equal to 6.023 into 1.602, 10 to the power of 24, 10 power -19 कितना है, 10 to the power of +4 में आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 96487 कूलम्स।
1 फैरेड का कांस्टेंट वैल्यू है 96487. वी हैव यूज्ड दिस वैल्यूज इन द पार्ट 1 नर्स्ट इक्वेशन में. F का values Faraday's constant. F value is 96500. We have used. Or simply we can write in this place 96500 coulomb is used. Accurate values बोलना तो ये values use कर सकते हैं, नहीं तो 96500 coulombs, 96,500 coulombs is the value of 1 Faraday cage. तो देखिए यहाँ पर 1 mole of electron बोले तो इतना है. So यहाँ पर 2 moles रिक्वायर्ड है. 2 moles of current पास किया तो आपको 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड. ये सब क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में. तो अगर यहाँ पर देखें, सपोज ये जो है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करूंगा. अब मैं इसको एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा यहाँ पर. सपोज यहाँ पर आपके ये जो बैटरी है इसका कैपेसिटी है लेट्स से 1.5 एम्पियर है. यहाँ 1.5 एम्पियर का बैटरी लगा है एंड करंट इज पास थ्रू दिस फॉर सपोज 10 मिनट्स. यहाँ पर कितना 1.5 एम्पियर है, ये करंट यहाँ पर पास कर रहे फॉर 10 मिनट्स. इट इज पास फॉर 10 मिनट्स. देन हाउ मच क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड और हाउ मच सोडियम इज डिपॉजिटेड. सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्लोरीन कितना लिबरेट हुआ है वो पॉइंट देखेंगे. हाउ मच क्लोरीन इज लिबरेटेड. सो फर्स्ट उसका एक रिएक्शंस नोट कीजिए. नोट द रिएक्शन. क्लोरीन का रिएक्शन क्या है? Cl माइनस which gives rise to Cl माइनस. यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो आपको हाफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज लिबरेटेड. 1 mole of electrons which gives rise to half moles of chlorine gas. Is it right? Okay. Now 1 mole of electron है तो 1 mole बोले तो ये क्या हुआ? This is 1 mole. ये 1 mole है. 1 mole को आपको कितना क्लोरीन गैस लिबरेट है? हाफ मोल्स ऑफ Cl2. दैट इज 1 Cl. 1 Cl का मास है 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहे हैं यहाँ पर. ये 1 मोल का हुआ. अब हम कितना पास करें यहाँ पर? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन. कितना पास करें देखिए यहाँ पर थोड़ा 10 मिनट्स तक पास करे. 1.5 एम्पियर है तो Q इज इक्वल्स टू आपको फार्मूला दिया था Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. तो फर्स्ट स्टेप में आप Q फाइंड आउट कीजिए यहाँ पर. तो बट इन दिस केस वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. I का वैल्यू है 1.5 एम्पियर. टाइम कितना है? 10 मिनट्स है. इसको सेकंड्स को कन्वर्ट कीजिए. सेकंड को कन्वर्ट किया तो 600 इंटू 1.5 900 कूलम्स टाइम पासिंग. ठीक है, 900 कूलम. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट में 1 मोल को इतना है. 1 मोल इज नथिंग बट व्हाट 96500 कूलम्स अगर तुमने पास किया तो आपको मिलेगा 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस. बट हाउ मच वी आर पासिंग हियर? ओनली 900 कूलम्स वी आर पासिंग. सो फॉर दिस हाउ मच क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड? तो इस तरह मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर. सो योर आंसर इज 35.5 into 900 divided by 96500. This is your answer. This much of chlorine is liberated when 1.5 ampere current is passed through the solution for 10 minutes. क्लोरीन गैस का हुआ. सिमिलरली आपको अगर सोडियम का होना चाहिए तो देख लीजिए यहाँ पर 1 मोल को सोडियम 1 मोल है तो here 1 मोल gives rise to 23 grams. लेकिन आपके पास कितना है? 1 मोल बोले तो चार्ज कितना 96500 है. बट यू आर पासिंग ओनली 900 ग्राम. दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. 900 into 23 divided by 96500 is the answer. That is the sodium deposited on this. This is about the quantitative aspects of electrolysis. ये फर्स्ट लॉ के बारे में हो. Now I am moving to और एक थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर
क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? When same quantity of electricity is passed through the different electrolytic solution connected in series। देखिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा 3 डिफरेंट बीकर में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया है। बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2 एंड बीकर नंबर 3। 3 beakers I have taken, 3 beakers. In each case, in the first case, one is एनोड कनेक्ट किया, एनोड एंड अदर वन इज कैथोड। सो हियर 2 in 3 beaker I have 3 cells I have constructed। तो यहाँ पर देखिए वन इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कनेक्ट किया है। And these two are connected. It is connected with each other, and this one is connected to the battery. Plus minus, ये प्लस है और ये माइनस। चल ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। So there are 3 beakers, that is 3 electrolytic solutions in which assume करो तो फर्स्ट केस में आई हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड के केस में लेट्स से कॉपर सल्फेट आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम एनी गोल्ड क्लोराइड AuCl3 एक्सेट्रा हैव टेकन। आर सिंपली एल्युमिनियम इमेज ऑफ एल्युमिनियम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड हैव टेकन। ये जो बैटरी है यहाँ पर हमने फिक्स किया है Q का वैल्यू कांस्टेंट है। वी नो द वैल्यू ऑफ Q, देन हाउ मच Ag copper and Al is getting deposited। AgCu copper, क्योंकि यहाँ पर Ag plus ion, silver ions are there, Cu plus 2 ions are there, Al plus 3 ions are there, plus 3 plus 1 plus 2 plus 3। मैंने उसको चार्ज को हाईलाइट किया है यहाँ पर। Its charge is plus 1 plus 2 plus 3। Now what is the atomic weight of silver? सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है? 108 ग्राम सिल्वर का एटॉमिक, कॉपर का 63 ग्राम रफली और एल्युमिनियम का 27 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, वी नो द 3 इक्वेशंस। अगर यहाँ पर डिपोजिशंस का बात करें तो क्या मिलेगा आपको? 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ electrons to get deposited 1 mole। वही अगर कॉपर रहा तो 2 moles of electron which gives ion। एल्युमिनियम के केस में क्या है? 3 moles of electrons which produces 1 mole of aluminum। Now directly you can say, suppose assume कीजिए मैं यहाँ से totally in generally I have passing 1 mole of electron, that is 1 farad current is passed through this। So 1 मोल पास की तो ये कितना डिपॉजिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या है यहाँ पर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये कैसा फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली? यहाँ पर एक शॉर्ट फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड दैट इज W, दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू number of moles of electrons, number of moles of electrons passed, कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आप टोटल चार्ज भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टोटल करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। टोटल करंट कितना पास कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो पॉइंट लेते हैं डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेज। So let oxidation state are you can write charge on species or oxidation state। अब यहाँ पर ही देखिए ये कैसा है, ये आप नोट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ करंट पास डिवाइडेड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इस चार्ज। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया, तो 1 फैरेड
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास केस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, चार्ज कितना है, +1 है, तो इन दिस केस 1 मोल इज गेट डिपॉजिटेड। तो मैं यहाँ पर 1 मोल फिक्स रखा है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि चार्ज 2 है तो यहाँ पर ओनली 0.5 मोल डिपॉजिट होगा, एंड इन दिस केस डिवाइडेड बाय 3, 1/3 0.333 moles is get deposited. So number of moles deposited is depends upon its charge. ये रहा आपका quantitative aspects. This is the quantitative aspects. You just go through few more examples. In the next class we'll discuss about the numerical problems on Faraday's first law and second law. Objective के लिए आपको Faraday's first law and second law के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस सम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। नाउ विल मूव टू द numerical problems on first law and second law in the next class. Thank you.